Assalamu alaikum, dear student. I am प्रोफेसर मोहम्मद एहसान चट्ठा। हम जो है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में जो है वो लेक्चर स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर में जो है वो ये हम जो है वो काफ़ी सिलेबस को कवर कर चुके हैं, लेकिन जो है वो आपने जो है वो इस पे जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं करते। कोई आपकी क्यूरीज है कि बहुत अच्छी आपको समझ आई, नाइस, गुड, एक्सीलेंट, व्हाट्सएवर जो भी है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर को, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो हमारा जो है वो हिस्सा है जिसको हमने टैकल करना है, जिसको हमने आज अंडरस्टैंड करना है, वो है जिगलर नाटा कैटालिस्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा ओलेफिन। Ziegler Natta catalyst polymerization of 1-alkenes, alpha alkene. Student, you know short history of the Ziegler Natta catalyst, named after two chemists, Carl Ziegler or Ziegler Natta, is a powerful tool to polymerize alpha-olefin with high linearity and stereoselectivity, stereospecificity, controlled molecular weight, and many other advantages. A typical Ziegler Natta catalyst system usually contains two parts. One part is transition metal, particularly group 4th A to have a metal such as titanium, zirconium, hafnium. Group 4th metals, transition metal, titanium, zirconium, and hafnium. These elements are mostly used in Ziegler catalyst. In first part, these transition elements are linked with an organic linear chain such as ethyl, propyl, butyl, known as organotitanium, organoaluminium. Here is the organoaluminium is taken as co-catalyst along with titanium chloride and many other forms of Ziegler Natta catalysts. Ziegler Natta catalysts may include titanium chloride, टाइटेनियम के बाद जो है वो अगर आप देखें ट्राईएथाइल एल्यूमिनियम, इसके साथ हम ले सकते हैं प्लस ट्राईएथाइल एल्यूमिनियम, और ट्राईएथाइल एल्यूमिनियम को हम रिप्लेस करें तो ये जो हमारे पास डाईएथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड या सिंपली इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये दोनों भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। डिपेंड करते हैं सूरत हाल में, दोनों जो है इसके में जिगलर नाटा कैटलिस्ट में पॉलीमराइज के जो है वो दो हम इसको कैटेगराइज करते हैं। एक हमारे पास जो है वो होमोजीनियस कैटालिसिस है, जिसमें जो होमोजीनियस कैटालिसिस में जिगलर नाटा कैटलिस्ट में के साथ हम मैग्नीशियम क्लोराइड की सरफेस पे इसको पॉलीमराइज करते हैं। यानी पहले जो है पॉइंट में हम इसके साथ जो होमोजीनियस जो कैटालिसिस है उसमें मैग्नीशियम जो क्लोराइड है ये हम जो है वो एज ए
सपोर्टर जो है यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और मैग्नीशियम जो है वो क्लोराइड जो है ये हम यहाँ पे होमोजीनियस जो कैटालिसिस है उसमें हम मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं। जबकि जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की अगर बात करें, सेकंड जो हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, हेट्रो में जो है वो अमूमन जो है में हम जो है वो मेटालोसीन जो है ये कंसीडर करते हैं, मेटालोसीन। तो हेट्रोजीनस जो है वो मेटालोसीन जरिए करते हैं। लेकिन जो हम अपने जो है वो सिलेबस की हद तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हमारे सिलेबस में होमोजीनस कैटालिसिस है, हम उसी पे फोकस जो है वो करेंगे। तो चलते हैं जो है वो आगे मूव करके हम जो है वो इसके दरियाफ्त इसकी किसने की। तो in 1953 German chemist Carl Ziegler discovered the catalyst system able to polymerize ethylene into linear high molecular weight polyethylene, which cannot be achieved by conventional method which is already present at that time. The system contained titanium metal halide along with group of dimer of alkyl combination with aluminium and other group. Ethyl aluminium, triethyl aluminium, diethyl ammonium chloride, and simple ammonium dichloride can be considered here as catalysts. As you know, student, here you can see that triethyl aluminium we are taking as a combination with titanium chloride as a Ziegler catalyst, which act on olefin to produce linear polymer, as in first example highlighted with red color. Following the catalytic design, Italian chemist Giulio Natta found the polymerization of the alpha-oleffin resulted in stereoregular structure, either stereoactive or isotactive. Mostly isotactive is best produced by this catalyst, but depending upon the condition and alpha-olefin, we can produce both tacticity, stereoactive and isotactive tacticity and stereospecificity of the polymer. Both tacticity, three types: isotactive, stereoactive and atactive. Already you know that these terms are well understood by you. As our polymerized start to polymerize, here you can see highlighted areas that in Ziegler Natta catalyst, if our starting chain repeated after certain zig or wedge position, wedge और यानी आपके जो है two sides हैं, one is behind and one of toward yourself. Which is toward yourself is written with bold arrow, such as shown, bold arrow. And second, you can write with dotted position. In this way, we can mention if these are
in same condition throughout backbone, zag and backward position, yani front and backward are in same pattern throughout the polymer as in here with highlighted in green colors. These are known as isotactive polymer, or here is polypropylene is taken, so the name is isotactive polypropylene. Isotactive polypropylene, in which both the position of the group that is towards your face and one is toward the behind, these are changes and regularly, even not just change one become another position. These are have exactly remain same, then its position is known as iso. Iso means similar arrangement here. Next, same जो catalyst we can take diethyl ammonium chloride. You can see here diethyl ammonium chloride we can take to polymerize. Diethyl ammonium chloride produce structures diethyl ammonium chloride, और जो इसमें हम सॉल्वेंट अगर हम ले सकते हैं तो वो सॉल्वेंट हम आइसो ये जो आइसोटेक्टो के बाद जो है हम सॉल्वेंट डाई इथाइल एल्युमिनियम क्लोराइड या डाई ब्यूटाइल एल्युमिनियम क्लोराइड, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं इंटॉल्वेंट सॉल्वेंट, then the stereochemistry of the polymer polypropylene will be stereotactive. Student, you are saying that in this lecture that both the positions are alternative in position as highlighted in red colors, then it is जो है वो in backside with green colors, then again it come to the front side and again at back position. This position is alternative position, front back. This is known as stereotactive polypropylene. This structure is stereotactive polymerized जो है वो polypropylene, और this reaction is take place in the presence of vanadium chloride at minus 78 degrees Celsius temperature, and catalyst slightly we change the tertiary जो butyl या dibutyl aluminum chloride here. So this is the combination of aluminum with organic chain along with halides. This is known as Ziegler Natta catalyst, and Ziegler Natta catalyst, as already explained, that this is mostly used to obtain the desired polymer tacticity. Either we want isotactive polypropylene or we like stereotactive polypropylene. Both have the different property, and both polymers are the linear polymer, but their structures have stereo-regular structures have the two different stereo conformation. Stereo regularity is different in both structure as shown in their chemical structure here. Next, student move towards the Ziegler Natta catalyst. Again we highlight
Advantage over traditional polymerization method. Advantage over ट्रेडिशनल पॉलीमराइजेशन मेथड के हमारे पास जो पहले जो पॉलीमर मेथड जो है वो के मेथड जो है लागू थे, उनमें जो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये उनसे कैसे बेहतर है, क्या इसकी एडवांटेज है। तो ट्रेडिशनली पॉलीमराइज जो ओलिफाइन हम पॉलीमराइज करते थे, वो जो रेडिकल पॉलीमराइजेशन, उसमें हमारे पास जो है वो कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमें जो है वो मिलती थी। पहली जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हम फेस करते थे, दैट इज द रेडिकल लेड टू ब्रांच पॉलीमर्स। रेडिकल की मौजूदगी में हमारे पास जो है पॉलीमर की हम एक लंबी चेन लीनियर पॉलीमर की हासिल नहीं कर सकते थे। रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हम ब्रांच चेन पॉलीमर जो है वह हम ऑब्टेन करते थे, जिससे मॉलिक्यूलर वेट भी जो है कम और कंट्रोल में नहीं रहता था। और दूसरा उसकी जो स्टीरो स्पेसिफिसिटी है, यानी स्टीरोकेमिस्ट्री जिसको आप कह सकते हैं, वो भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बहुत सारे जो है इसमें जो है एडवांटेज हैं, लेकिन जो है ये सबसे मेन एडवांटेज जो है अल्फा ओलिफिन का ये है कि हम इनको लीनियर हाई मॉलिक्यूलर वेट, कंट्रोल्ड मॉलिक्यूलर वेट, स्टीरियोस्पेसिफिसिटी भी जो है वो कंट्रोल इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। लीनियर अनब्रांच पॉलीस्टाइरीन and regulated polypropylene polymerization are best example which are obtained by the Ziegler Natta catalyst. This technique is largely limited to potential application of these polymeric material, as you see with the highlighted with purple colors. जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो स्टीरो सेलेक्टिविटी जो है वो एक्सप्लेन करता है, और एज यू नो दैट इन जो है वो आयल स्पेशली पॉलीप्रोपिलीन ट्रेडिशनल मेथड्स in given in diagram, we get the linear low molecular weight polymer which are mostly used as oil. So high molecular weight polymers are obtained in the presence of Ziegler Natta catalyst. Invention of Ziegler Natta catalyst successfully addressed these two problems. Catalyst can give the linear alpha olefin polymer with controlled molecular weight of the polymers. Moreover, it make fabrication of polymer with specific toxicity and controlled stereochemistry of the product. Either we want to get the syntioactive or isoactive polymers, we can achieve both of them. Mechanism of Ziegler. Next we move to mechanism of Ziegler Natta catalyst. Student, mechanism of Ziegler Natta catalyst. Here the how the Ziegler Natta catalyst activate the alpha olefin to get the result. It is necessary to understand catalyst structure before understanding how catalyst system work. In catalyst, titanium chloride, tetrachloride plus triethyl aluminum catalyst system is taken as example. Titanium chloride compound has crystal structure, which titanium atom is coordinated to 6 chlorine atom on the crystal surface, as titanium atom is surrounded by 5 chlorine atom.
with one empty orbital is likely to be filled as shown in diagram. One empty titanium, one empty orbital is like to be filled with others group. टाइटेनियम जो है जो 5 इसके टोटल जो इसमें जो क्लोराइड के एटम हैं वो अटैच जो है वो आप देख सकते हैं। टोटल जो है वो हमारे पास जो है वो 6 क्लोरीन यहाँ पे अटैच होनी चाहिए, लेकिन टाइटेनियम में जो जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो इसमें जो है वो 5 क्लोराइड अटैच होते हैं। तो एक इसका एम्प्टी ऑर्बिटल जो है फिल होने के लिए मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर में आपको हाईलाइट जो है वो करके बताया गया है। जैसे ही हम इसको जो है लिंक करते हैं एथाइल ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम के साथ, तो ये जो हमारे पास जो एक लिंकेज जो है वो एथाइल का बनता है। तो ये एथाइल जो है वो चेन को ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ने में ग्रीन कलर में हाईलाइट किया गया, ये मदद करता है। और वो जो हमारा जो एम्प्टी ऑर्बिटल है जो टाइटेनियम पे कोऑर्डिनेशन में मौजूद है, 6 के बजाय 5 ग्रुप अटैच हैं, वो अभी स्टिल यहाँ पे मौजूद रहता है। तो ये इसका जो है वो प्रोसेस है। इसमें जो टाइटेनियम है उसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो यहाँ से जो है वो दूसरा जो कोई भी अल्फा ओलेफिन के इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट करेगा और कोऑर्डिनेशन से हम उसको कंट्रोल करेंगे, और इस तरह टाइटेनियम जो है वो इटसेल्फ रिडक्शन की तरफ जा रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो रही है। फर्स्ट अगर हम देखें तो जो है वो हम इसके इनिशिएशन की बात करें कि हमारे पास इनिशिएशन स्टेप जो है वो किस तरह जो है वो सामने आता है। The polymerization reaction is initiated by forming alkene metal complex, यानी सबसे पहले जो है वो alkene और metal का complex बनता है। Next, when a vinyl monomers that जो propylene में propylene है come to active metal center, it can be coordinated to titanium atom by overlapping their orbitals. Dear student, you are see that titanium chloride empty orbitals are overlapping here in circle in red colors. These are overlapping here with pi bonding, and these state of the titanium orbital d x square minus y square orbital oriented with pi anti-bonding orbitals and overlapping with them, and in this way by overlapping with them this जो position vacant position है that is filled with alpha olefin. In this way this initiation will be started and chain growth will become. The carbon-carbon double bond of alkene, you know that student has pi bond, and which consists of filled pi bond orbital and empty pi anti-bonding orbitals. Student, you know that when pi bond will be formed, there are two types of the orbital will be resulted. One is the in which electron are present that form bond, and one remain empty, that is known as empty pi anti-bonding orbitals. In olefin there is empty pi bonding जो orbitals है वो empty है। ये इसकी जो आप पोजीशन जो अगर आप कंसीडर करें तो इसको आप यहाँ पे हाईलाइट किया गया रेड कलर में। तो एंटी पाई जो ऑर्बिटल है ये डी एक्स वाई है। डी एक्स वाई जो है ये मुकम्मल जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग करता है जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई से जो टाइटेनियम का ऑर्बिटल है जो उसका एम्प्टी ऑर्बिटल था उसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, और इसमें पर्पल कलर में आप ओवरलैपिंग आपको की गई है। और इस तरह जो ये दोनों ओवरलैपिंग करके
एक दूसरे से जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो शेयर करते हैं, और वंस दिस पेयरिंग शेयर टुगेदर, दिस जो ऑर्बिटल है टाइटेनियम dx² - y² ऑर्बिटल come mightily close with the pair of the electron toward the empty orbital of the electron of the pi orbital in pi anti-bonding orbital sharing another pair of the electron. Here, student, you should know that titanium dxy orbital come together and share pair of the electron. Once they are together, this titanium dx² y² orbital come might close to the pi anti-bonding orbital sharing another pair of the electron. Here, as shown in diagram with axes, two axes are shown, x and y axis here in red circle. These are overlapping together. The formed complex, metal complex 1, that goes through the electron shuffling with several pair of the electrons shifting their positions. The pair of the electrons from carbon pi bond shift to form titanium carbon bond. Titanium carbon bond. While the pair of the electron from the bond between titanium and triethyl aluminum group shifted to form bond between the ethyl group and methyl substituted carbon of propylene, as shown in figure 7. Student, you are see that here these are shifted together to form a quite linear structure with these polymers. This combination will be easily controlled, and their toxicity will also control with the help of this Ziegler Natta catalyst. As we see in structure that how this shifted chain shifted towards their positions as it coordination after overlapping, then it become this structure, then finally it rearrange themselves into this form as clearly. Hopefully you student will be learn much better from the initiation process of Ziegler Natta and its linear polymerization and controlled toxicity, controlled molecular weight of polypropylene and many others polymers. Next, we move to propagation. How it propagate? When other propylene molecule come in process start over and given लीनियर पॉलीप्रोपिलीन, पहले वो एक मोनोमर वो अटैच हुआ, फिर ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में उसी साइड पे दो मोनोमर्स अटैच हो रहे हैं। जैसे कि आपको ये ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं कि पहले एक, फिर उसकी मदद से दो मोनोमर्स अटैच हो रहे हैं, और ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है बार बार। इस प्रोसेस को रिपीट होने से हमें एक लीनियर चेन पॉलीप्रोपिलीन एक विद स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री वो मिल रहा है। तो इसी को हम वो प्रोपोगेशन यहाँ पे कहते हैं, और ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी के साथ हमारी चेन प्रोपोगेट कर रही है, और ये कंट्रोल्ड मॉलिक्यूलर वेट भी हमें इससे मिलता है। तो हमने वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी इस कैटलिस्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं, कंट्रोल मॉलिक्यूलर वेट भी ऑब्टेन कर रहे हैं, जिसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट हम इसमें पॉलीप्रोपिलीन हो या कोई भी अल्फा ओलेफिन है, उनको हम
इससे हाई मॉलिक्यूलर वेट, कंट्रोल्ड स्टीरियोसेलेक्टिविटी, टैक्सिटी, जिसमें दो टैक्टिसिटी की हमने बात की, एक आइसोटैक्टिव और दूसरा सिंडोटैक्टिव, हम अपनी मर्जी की जो है वो चेन इसकी मदद से हासिल कर सकते हैं। The last step here is the termination of the chain. Termination is the final step of the chain growth polymerization, forming dead polymers, yani desired product, as illustrated in figures. That co-catalyst triethyl aluminum with highlight here, that coordinators with titanium and ethyl group. These bond position are shown exactly. These bonds are maintaining here, or titanium is coming towards here, and in this way we get here carbon chain polymers, and along with titanium valency satisfied with hydrogens. This mechanism is the termination. Here we can terminate the chain by shifting the bond here, as you see here in diagram, that the chain hydrogen will shift it to other position, and finally it terminate the chain. Titanium जो लास्ट जो है we get the product. This is known as termination. जो approach है वो here are of different types. Here is the जो polymer chain beta elimination from the polymer chain forming metal hydride. बीटा एलिमिनेशन जो है यहाँ पे हम इसे कंसीडर करेंगे बीटा एलिमिनेशन. ये टाइटेनियम जो है वो बीटा एलिमिनेशन जो है वो इस यहाँ पे हो रही है इसके, और जो है वो इससे मेटल हाइड्राइड यानी टाइटेनियम हाइड्राइड जो है वो बन रहा है. तो इस तरह जो है वो चेन जो है वो बीटा एलिमिनेशन की मदद से टर्मिनेट हो रही है. सेकंड पॉइंट में बीटा जो एलिमिनेशन है विद हाइड्रोजन ट्रांसफर टू मोनोमर, ये भी पॉसिबल है कि अगर हम जो है वो हाइड्रोजन जो है वो मोनोमर्स ही को ट्रांसफ़र कर दें. जैसे कि आप एग्जांपल में ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये हाइड्रोजन की जो ट्रांसफ़र है वो इस जगह पे आपको नज़र आ रही है कि हाइड्रोजन की जो ट्रांसफ़र है यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये वाला इधर हम मोनोमर ही को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो जब हाइड्रोजन जो है वो चेन के अंदर ही मोनोमर को ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये भी बीटा एलिमिनेशन है विद हाइड्रोजन बाय द मोनोमर्स. तो टू टाइप्स ऑफ द टर्मिनेशन मे बी पॉसिबल. वन इज द बीटा एलिमिनेशन फ्रॉम द पॉलीमर चेन बाय द फॉर्मिंग मेटल हाइड्राइड, and other is beta elimination with hydrogen transferred to the monomers. In two ways, this chain terminates to form the final chain of polypropylene, polystyrene, and many other alpha-oleffins. अगर काइनेटिक्स जो है वो अमूमन इसकी बात की जाए कि जो हमारा जो फैक्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो उस पर इसकी काइनेटिक्स जो है उसका क्या असर होगा, तो ये चूँकि अगरचे वो हमने जो है वो सिलेबस में इतना नहीं पढ़ना जो है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत काइनेटिक्स के बारे में जो है इसकी अगर हम जानें तो जो हमारे पास जो इसका मैकेनिज्म के ऊपर जो कंडक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे ग्रुप्स जो है वो कंडक्टेड काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट KIE कहते हैं एक्सपेरिमेंट है. इसकी वजह से जो है वो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो किस तरह कंट्रोल होते हैं और इसका रेट डिटरमिनिंग जो है वो आइसोटोपिक स्पीशीज से जो है वो कैसे मालूम किया जाता है,
वो थोड़ा सा जो है वो दिखाया गया है कि इसकी काइनेटिक्स जो है वो उसके ऊपर जो है वो जो है ग्रब्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिससे जो है वो हम ड्यूटेरेटेड एथिलियम इस्तेमाल करते हैं. And deuterium, you know that hydrogen isotope, when we use the deuterium here, in one hydrogen is हमारा जो है वो our deuterium, then normal ethylene, polypropylene, these are catalyzed with a Ziegler catalyst, then can exact locate the position of hydrogen, how it changed, and coordinated to obtain. The mechanism kinetics show by the graphs. In this method, we see that how our जो है experiment जो है वो mechanism is given here. Next जो है वो move to regio and stereo selectivity. The propene polymerized most Ziegler Natta catalysts are highly regio selective, favoring 1,2 primary insertion. Mostly जो है 1,2 primary insertion will be favored here with electronic and steric effect. Primary insertion occur with Ziegler catalyst give to regioselective product as in given 1,2 insertion highlighted with red colors in here. 1,2 insertion to get the stereo and regio selectivity. Stereochemistry of the polymer made from Ziegler Natta catalyst can be well regulated by the rational design of the ligand by using different ligand using stereochemical polymers either obtains or either we get 1,2 isotective polymers. Both position relatively we can easily control. The relative stereochemistry of the adjacent chiral center with the macromolecule is defined as tacticity. Three kinds of the stereochemistry is possible: isotactive, syndotactive, and the last is atactive. Isotactive structures are located on the same side of the polymer backbone, here as in shown structure where the blue colors isotactive are the same side of the backbone of the polymers. Next जो है वो syndotactive are those which are in alternative position on the backbone of the polymers, and atactive जो है in which there is no regular trend of the arrangement of the backbone. This is known as atactive. So the Ziegler Natta catalyst can control the stereo and regio selectivity of the polymers. Mostly we can get isotactive and syndotactive by this method. Choice of the Ziegler Natta catalyst regulate stereochemistry. We use propylene polymerized as an example here. Recall the mechanism section. A monomer approach the metal center and form four-membered ring intermediate. The binding of monomers to reactive metal carbon-carbon bond should occur in from the least hindered side. Steric effect here is effective. Least hindered sides will be attacked as shown in figure. जो जैसे ये आप फिगर में जो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो लीस्ट हिंडर साइट है यार जो है ये पॉलीमर जहाँ पे हाइड्रोजन जो है मौजूद है यहाँ से अप्रोच करता है, और इसके यहाँ से अप्रोच करने की वजह से स्टीरिक इफेक्ट की वजह से हमें जो रिक्वायर्ड है जो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है आइदर ट्रांस एक्टिव साइट और हमारी सिस एक्टिव साइट है वो कैसे बनती है. तो एक्टिव स्टेटस ट्रांस यू नो मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस इन और effect is trans जो है is less sterically hindrance and cis is
more sterically hindered. So both cis and trans, here are the configuration we can see. Following the trans complex methyl group on the newly added monomers is trans to the previous monomer. The step repeats so that propylene polypropylene will be obtained. However, if the metal center is coordinated with bulky ligands such as ethyl group denoted by Y group, then we can obtain the cis configuration and incoming monomers will adapt to cis conformation and avoid the serious steric effect of the bulky group ligands. Thus, presence of the bulky ligands propylene monomers sent to the cis position in growing chain, and resulted polymer is the isotector product. Here you can say that if we increase the जो है वो बल्कि ग्रुप अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम इथाइल ग्रुप जो है वो बड़े साइज का है, और यहाँ पे हम अगर उसको बढ़ाते हैं तो वी ऑब्टेन आइसोटेक्टिव. हियर यू सी दैट जो है वो स्ट्रक्चर इज आवर आइसोटेक्टिव. Structure is obtained if the bulky group is attached here. In second case, if the bulky group are not attached along with aluminium, then these go to another less hindering position, that is trans. So trans polypropylene known as Sindo polypropylene will be obtained here. Trans intermediate avoid 1,3 strain of methyl group producing syndotector polypropylene. Similarly, in B diagram जो है figure जो है structure, process of the bulky group ligand cis insertions या cis intermediate adapting generating the isotector polypropylene. Student now move to the application of Ziegler Natta catalyst. Where we use Ziegler Natta catalyst. Ziegler Natta catalyst is worldwide very profitable easily in industry, with the production of more than 160 billion pound and creation of numerous positions. Their product have been extensively applied in different area, largely improving quality of paper life. They can catalyze alpha-oleffin to produce various commercial polymer like polypropylene, like polyethylene, polybutylene. Polypropylene is reported to be top two side widely used in synthetic plastic in the world. So polypropylene is widely used plastic. Among the polypropylene fabricated with the Ziegler Natta catalyst, there are three major classes: high density polypropylene या polyethylene. One is the high density polyethylene. Linear low density polyethylene second, or third is the very high molecular weight polyethylene. So three types we are considering here: high density, high molecular weight, and very low density molecular weight polyethylene, which are produced by using Ziegler Natta catalyst. You know that the various degree of the polymerization is an extensive use in different field. As you know that high degree of polymerization, high density of the polymerization have compact structure, better strength, mostly used in
जो हाई डेंसिटी जो है वो मोस्टली यूज एज ए होमोपॉलीमर एंड वाइडली अप्लाइड इन garbage containers, detergent bottles, and water pipe because of its high tensile strength. तो garbage container, detergent bottle, water pipe, both these are form of polyethylene, high density polyethylene because of their very high tensile strength. High density polyethylene whose branches degree is quite low has many short branches. Its better toughness and flexibility and other stress cracking resistance make it suitable for material like cable covering, bubble wrap, and so on. While under जो वेरी जो हाई molecular weight जो polyethylene है is molecular weight is between the 3.5 to 7.5 millions compared to polyethylene and polypropylene. These are जो है वो because of low weight, these are जो है used in other field due to less their tensile strength, mechanical property, thermal resistance. Addition, we add another जो है वो polymer to these polymer such as polypropylene. We can add to make it more resistant to its structure. Polypropylene is wide range of application in packing and building infrastructure and building construction. Substrate scope and limitation. Ziegler Natta catalyst as effective for polymerization of alpha-olefin, diene, butadiene. However, monomers such as 1,3-disubstituted double bond vinyl chloride cannot be polymerized by Ziegler catalyst either because of free radical during the reaction. Another situation with Ziegler Natta catalyst don't work when substrate is acrylate. Vinyl जो है वो acrylic acid when we substituted with methyl group to become acrylate. Acrylate जो है when become acrylate, this reason is the Ziegler catalyst जो है olefin initiate anionic vinyl जो है polymerization in those monomers. तो जिगलर जो है वो इन सबस्ट्रेट में जो एक्रेलेट में अच्छी तरह जो है वर्क नहीं करता. उसकी रीजन वही है कि ये जिगलर कैटलिस्ट जो है वो कैटलिस्ट जो है वो ऑफन जो है वो इनिशिएट करता है एनोनिक पॉलीमराइज मेथड को. तो जो है इस तरह जो है इसमें एनोनिक पॉलीमराइजेशन मेथड को चूँकि ये आयनाइज करता है तो यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाता है. ये हमारे जो है तो कुछ था जिगलर नाटा कैटलिस्ट and stereoselectivity, high molecular weight obtained, linear polymer जो है high density linear polymer जो है obtained, and various controlled polymer obtained by the use of Ziegler Natta catalyst. Hopefully you understand well about the Ziegler Natta catalyst, its mechanism, its application, and its limitation, and its structure mechanism, how it bind with the various olefin and to get various structure, isotactive, syndotactive, and other जो है वो type of tacticity और its limitation. स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी फीडबैक ज़रूर देंगे. मुख्तलिफ जो है वो आप इसकी क्यूरीज, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप इसमें ज़रूर जो है वो पॉइंट ऑफ करेंगे. और ये आपको जो है वो लेक्चर जो है वो उसको जो है वो आपने अच्छी तरह समझा. तो थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़. फ़ी अमान अल्लाह. सी यू नेक्स्ट.